शिक्षा अधिकार सर्वशिक्षा अभियान सभी पढ़ंतु सभी पढ़ंतु। मन रखंतु आपणक प्रिय यूट्यूब चैनल रो नाम सुपरस्टार्स एक्सप्रेस। प्रत्येक रविवार दिन 10टा पर ठारू उक्त चैनल खोली नुआ नुआ चटापट स्मार्ट कार्यक्रम देखिबार सुजोग नियंतु एवं आमको उत्साहित करंतु। एबे आसंतु अष्टम श्रेणी ए न्यू अप्रोच टू इंग्लिश रो पाठ्यक्रम रे शामिल हेबा। लेसन 1 ओनली मेड इम्पॉसिबल पॉसिबल। ओनली असंभव को संभव कले। Once a thief was caught while stealing a purse from a man. The thief was handed over to the police. The police sent him to jail. The person who was arrested had to be tried out in a court. One note stealing अर्थ चोरी करिबा, arrest अर्थ बंदी करिबा। Once a thief was caught while stealing a purse from a man. थरे गोटे चोर जड़े लोकर मनी पर्स चोरी करथवा समय धरा पड़ी गला। द thief was handed over to the police. चोरटी को पुलिस रे जिम्मा दिया गला। द पुलिस sent him to jail. पुलिस ताकू कारागार को पठाई देला। द पर्सन हु वाज अरेस्टेड had to be tried out in a court. बंदी होइतिबा लोकटीर गोटे विचारालय रे जेरा बा विचार करा जिबार थिला। On the day of trial, the man whose purse was stolen hired a lawyer and 3 witnesses. The witnesses were present when the purse was stolen. The third witness had some problems. He could not come. ट्रायल अर्थ जेरा, लॉयर अर्थ वकील, विटनेस अर्थ साक्षी। On the day of trial, the man whose purse was stolen hired a lawyer and 3 witnesses. विचार दिन पर्स चोरी होइतबा लोकटी जण वकील 3 जण साक्षी को नियुक्त करिथिला। The witnesses were present when the purse was stolen. जेतेबेले पर्सटी चोरी होइतिला से साक्षी माने उपस्थित थिले। The third witness had some problems. किंतु तृतीय साक्षीटर किछि समस्या थिला। He could not come. से आसी पारला नाही। At the time of trial, the first witness was called to the witness box. The judge asked, "When was the theft committed? Was it day or night?" The first witness replied, "It was day, my lord." Witness box अर्थ काठगणा। At the time of trial, the first witness was called to the witness box. जेरा समय रे प्रथम साक्षी को काठगड़ा को डका गला। The judge asked, "When was the theft committed?" विचारपति पचारे चोरी केते बेले होइतिला? Was it day or night? या दिन ना राति थिला? The first witness replied, "It was day, my lord." प्रथम साक्षी कहला धर्मावतार या दिन थिला। The second question was, how many persons were there at the time of the theft? 5, your honor, said the witness. The judge's third question was, what was the color of the stolen purse? Black, your honor, replied the witness. The second question was, how many persons were there at the time of the theft? द्वितीय प्रश्न थिला चोरी समय केते जण लोक सेठारे थिले? 5, your honor, said the witness. हे महामान्य 5 जण साक्षी जनक कहला। The judge's third question was, what was the color of the stolen purse? विचारपति को तृतीय प्रश्न थिला चोरी होइतिबा पर्सर रंग कोन थिला? Black, your honor, replied the witness. हे महामान्य कला रंग साक्षी जनक उत्तर देला। Next, the second witness was called to the witness box. The judge asked him, when was the theft committed? Was it day or night? The second witness replied, it was night, your honor. Next, the second witness was called to the witness box. तापरे द्वितीय साक्षी को काठगड़ा को डका गला।
द जज आस्क्ड हिम व्हेन वाज द थेफ्ट कमिटेड विचारपति पचारे चोरी केतेबेले होइतिला वाज इट डे और नाइट दिन रे ना राति रे द सेकेंड विटनेस रिप्लाइड द्वितीय साक्षी कहला इट वाज नाइट योर ऑनर हे महामान्य यह राति थिला The judge next asked how many persons were there at the time of theft. The witness replied, 25, my lord. The judge finally asked the last question. What was the color of the purse? White, your honor, replied the witness. The judge next asked how many persons were there at the time of the theft. विचारपति तापर पचारे चोरी समय केते जन लोक सेठार उपस्थित थिले द विटनेस रिप्लाइड 25 माय लॉर्ड साक्षी जन उत्तर देला धर्मावतार 25 जन सेठारे थिले द जज फाइनली आस्क्ड द लास्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द कलर ऑफ द पर्स शेष विचारपति शेष प्रश्न पचारे पर्स रंग कौन थिला व्हाइट योर ऑनर रिप्लाइड द विटनेस साक्षी उत्तर देला हे महामान्य यह धला रंगर थिला The trial was postponed for the next day, but the lawyer was terribly upset. He scolded witness for giving contradictory facts, but each of the witnesses told that they had told the truth. एटी पोस्टपोन अर्थ स्थगित रखागला टेरिबली अपसेट अर्थ विव्रत हेले स्कोल्डेड अर्थ गाली देले कंट्राडिक्टरी फैक्ट्स मीन्स विरोधात्मक खबर द ट्रायल वाज पोस्टपोन फॉर द नेक्स्ट डे जेरा ता परदिन पे स्थगित रखागला बट द लॉयर वाज टेरिबली अपसेट किंतु वकील जनक अतिशय विव्रत होई पड़िथिले He scolded witness for giving contradictory facts. विपरीत तथ्य प्रदान कर से साक्षी मान को गाली देले बट ईच ऑफ द विटनेसेस टोल्ड दैट दे हैड टोल्ड द ट्रूथ किंतु से मान प्रत्येक सत्य कहथिले बोली कहिले The case is lost. There is no hope of saving the case. No need for sending a third witness, grumbled the angry lawyer. Only the lawyer's cook was listening to all this. He said, take me as the third witness. I can save the case. The case is lost. मोकदमाटी शेष हो गला देयर इज नो होप ऑफ सेविंग द केस या को बंचेबार आशा नहीं नो नीड फॉर सेंडिंग ए थर्ड विटनेस ग्राम्बल द एंग्री लॉयर क्रोधित वकील जनक कहले तृतीय साक्षी को पठाइबार आवश्यकता नहीं ओनली द लॉयर्स कुक वाज लिसनिंग टू दिस ए कथा को वकील को रोसिया ओनली शुणुला ही सेड टेक मी एज द थर्ड विटनेस आई कैन सेव द केस से कहला आज्ञा मते तृतीय साक्षी रूपे नियंतु मु मकदमाटी को रक्षा करि पारिबी The lawyer laughed and said, this is impossible and you a mere cook. You should know this, Ali. Ali in this faulty English said, sir, I have been cooking you for the last 10 years and you know I can also cook the judge and the governor. I am an excellent cook. I know how to make impossible possible. Give me a chance, sir. The lawyer laughed and said, वकील हसिले म कहले दिस इज इम्पॉसिबल एंड यू ए मेयर कुक यह असंभव एवं तुम्हें जड़े सामान्य रोषेया अल्ली यू शुड नो दिस तुम्हें यह जानवा उचित ओनली इन इज फॉल्टी इंग्लिश सेड सर आई हैव बीन कुकिंग यू फॉर द लास्ट 10 years एंड यू नो आई कैन ऑल्सो कुक द जज एंड द गवर्नर ओनली तार त्रुटिपूर्ण इंग्राजी कहला महाशय मु आपण को आज को 10 वर्ष हे रोषे कर दे आसुची एवं आपण जानती मु विचारपति राज्यपाल को मध्य रोषे कर पारिबी आई एम एन एक्सीलेंट कुक मु जने सर्वोत्कृष्ट रोषिया आई नो हाउ टू मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल
मु जाने असंभव को किपरि संभव करा जिवो गिव मी ए चांस सर महाशय मते गोटे सुजोग दियंतु The lawyer agreed, and the next day Ollie was called to the witness box. The judge asked, when was the theft committed? Was it day or night? Ollie replied, you may call it a day, Your Honor. You may also call it a night. The lawyer agreed. वकील राजी हो गले एंड द नेक्स्ट डे अली वाज कॉल्ड टू द विटनेस बॉक्स एवं तापर दिन अली को काठगड़ा को डकागला. द जज आस्क्ड व्हेन वाज द थेफ्ट कमिटेड वाज इट डे और नाइट. विचारपति पचारे चोरी क्यों समय होता दिन ना राति. अली रिप्लाइड यू मे कॉल इट ए डे योर ऑनर. अली उत्तर देला हे धर्माधर आपण दिन कही पारती राति मध्य कही पारती. यू मे कॉल इट ऑल्सो नाइट. When theft was committed, there was light, my lord, but slowly it became dark. It was the meeting time of day and night, Your Honor. The judge seemed to nod his head in agreement and asked the next question. When the theft was committed, there was light, my lord. अलियार उत्तर कहला धर्मावतार चोरी होगा समय दिनर आलोक थिला. बट स्लोली इट बिकेम डार्क. किंतु धीरे धीरे यह अंधार हो गला. इट वाज दैट मीटिंग टाइम ऑफ डे एंड नाइट योर ऑनर. हे धर्मावतार यह दिन और रातिर मिलन समय थिला. द जज सीम टू नॉट हिज हेड इन एग्रीमेंट एंड आस्क्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. विचारपति यह शुणी मुंड हलाई यह ग्रहण कला जना पड़ुले एवं परवर्ती प्रश्न पचारे. How many persons were there at the time of the theft? Ollie said, sir, you can say 5 or 25, Your Honor. The judge asked, how? Ollie said, when the theft was committed, there were only 5 persons, but slowly the number increased to 25. The judge seemed to nod his head in agreement. How many persons were there at the time of the theft? चोरी समय सेठार केते जण लोक थिले? Ollie said, sir, you can say 5 or 25. अली कहला हे धर्मावतार आपण 5 जन बा 25 जन कही पारती. द जज आस्क्ड हाउ. विचारपति पचारे केपरी. अली सेड व्हेन द थेफ्ट वाज कमिटेड देयर वर ओनली 5 पर्सन्स बट स्लोली द नंबर इनक्रीज टू 25. द जज सीम टू नॉट हिज हेड इन एग्रीमेंट. अली कहला जितेबाला चोरी घटला सेतेबाला 5 जन थिले किंतु धीरे धीरे सेमानक संख्या 25 को वृद्धि पाइला. विचारपति सहानुभूति रे मुंड हलाइथिबार जना पड़ला. The third question was, what was the color of the purse? Ollie said, you can call it black and you can call it white, my lord. The judge asked how. Ollie showed a purse which was white inside and black outside. The judge smiled an unusual smile and nodded his head in full agreement. The third question was, what was the color of the purse? तृतीय प्रश्न थिला पर्स रंग किपरि थिला. Ollie said, you can call it black and you can call it white, my lord. Ollie कहला धर्मावतार आपण को कला कहि पारंती एवं धला मध्य कहि पारंती. The judge asked how. विचारपति पचारे किपरि. Ollie showed a purse which was white inside and black outside. Ollie गोटे पर्स देखेला जार भीतर धला और बाहर कला. The judge smiled an unusual smile and nodded his head in full agreement. विचारपति एक अस्वाभाविक स्मित हास्य करी पूर्ण मात्रा राजी भाबळे मुंड हलाइले. Questions with answers. How many questions did the judge ask the second witness? The judge asked 3 questions to the second witness. The first witness said that
the theft was committed during the daytime. What did the second witness say? The second witness said that it was committed at night. Questions with answers. The first witness said that the color of the purse was black. What did the second witness say? The second witness said that the color of the purse was white. Why was the lawyer not happy? The lawyer was not happy because the two witnesses had given contradictory answers. Who was Ali? Ali was the lawyer's cook. What did Ali say to the lawyer? Ali told the lawyer to take him as the third witness in order to save the case. How was Ali's English? Ali's English was faulty or defective. There were errors in Ali's English. Which was the first error and which was the second error? The first error was I have been cooking you. The second error was I can also cook the judge and the governor. What was Ali's answer to the first question? Ali's answer to the first question was that it was both day and night. What did Ali do when the judge asked about the color of the purse? When the judge asked Ali about the color of the purse, he showed him a purse. That purse was white inside and black outside. Was the judge satisfied? How do you know? Yes, the judge was satisfied because he smiled and nodded his head in full agreement to Ali's answer. Was Ali clever enough to save the case? Yes, Ali was clever enough to save the case. Did Ali make impossible possible? Yes, Ali made impossible possible. Thank you. एक विशेष सूचना। नमस्कार। एतद्वारा समस्त विद्यार्थी माननकु सूचई दिया जाउछि कि आपण माने नूतन दर्शक होइथिबारु प्रथमे नाली अक्षर रे थिबा सब्सक्राइब बटन टिकु टिपंतु। तापरे सब्सक्राइब पाखरे थिबा बेल आइकन घंटी टिकु दबाई दियंतु। शेषरे ऑल लेखा होइथिबा घंटी टिकु टिपि दियंतु। एभली करिबा द्वारा आपण आमर समस्त शिक्षा प्रोग्राम देखि परिबे। Lesson 2 Poem The Rainbow Indradhanu. Boats sail on the rivers and ships sail on the seas, but clouds that sail across the sky are prettier far than these. One words. Sail अर्थ जल यात्रा करिबा, क्लाउड अर्थ मेघखंड। बोट सेल ऑन द रिवर्स, नौका गुड़िक नदी रे भासंती। एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, एवं समुद्र रे जहाज मान भासंती। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, किंतु आकाश रे जो मेघ गुड़िक भासुचंती आर प्रिटियर फॉर देन दीज, से माने एमानक ठारु सुंदरतम। There are bridges on the rivers as pretty as you please, but the bow that bridges heaven over the tops of trees and builds a road from earth to sky is prettier far than this. There are bridges on the rivers, नदी मानक उपरे पोलो गुड़िक रही। As pretty as you please, तुमको खुशी करला भली। बट द बो दैट ब्रिजेस हेवेन, किंतु जो धनु आकाश रे सेतु निर्माण करे। ओवर द टॉप्स ऑफ ट्रीज, वृक्ष मानक अग्रभाग ऊर्ध्वरे रही। एंड बिल्ड्स ए रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और पृथ्वी रु आकाश को पथ निर्माण करे। इज प्रिटियर फॉर देन दीज, एमान ठारो अधिक मनोहर अटे। क्वेश्चंस विथ आंसर्स। व्हाट सेल ऑन द रिवर्स? Boats sail on the rivers. What sail on the seas? Ships sail on the seas. What sail across the sky? Clouds sail across the sky.
What are the boats and ships compared to? The boats and ships are compared to the clouds. What are the rivers and seas compared to? The rivers and seas are compared to the sky. Which is prettier? The clouds sailing across the sky is prettier. Where are the bridges? Do they look pretty? The bridges are on the rivers. Yes, they look pretty. What does the bow in the poem refer to? The bow in the poem refers to rainbow. Who builds a road from earth to sky? The rainbow builds a road from earth to sky. What is the rainbow compared to? The rainbow is compared to the bridge. Which is prettier, the bridge or the rainbow across the sky? The rainbow across the sky is prettier. Which things in the poem are made by nature? The rainbow and the clouds are made by nature. The bow in the poem refers to the dash. Rainbow. Who sails across the sky? Cloud. Which is the prettiest of all? Rainbow, cloud, ship, boat. Rainbow. Thank you. ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ନାମ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ସ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଆପଣ ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ 10ଟା ପରେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଧାରାବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଥା ଆମ ସ୍ମାର୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆମ ସ୍ମାର୍ଟ ବକ୍ତା, ଆମ ସ୍ମାର୍ଟ ଅଭିନେତା, ଆମ ସ୍ମାର୍ଟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ପ୍ରଥମେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ। तत्परे सर्च यूट्यूब रे सुपरस्टार्स एक्सप्रेस टाइप करंतु किंबा वॉइस दियंतु। फल यही भाई आमर सुपरस्टार्स एक्सप्रेस रो लोगो और वीडियो शो करिवो। एथर आपण आम सुपरस्टार्स एक्सप्रेस लोगो उपरे क्लिक करंतु। फल यही प्रकार आमर आड बैनर प्रदर्शित हेबो। उक्त बैनर रो उपरे थिबा मेनू रे प्रदर्शित वीडियो सिंबल को क्लिक करंतु। एठार आमर समस्त वीडियोस दृश्यमान हेबो। आपणको इच्छिक वीडियो उपरे आपण क्लिक करी देखि परिबे। मने रखंतु जेतेबेले काहाको वीडियो शेयर करिवे सेतेबेले केवल लिंक टिकु कॉपी करी सेमानक पाखु शेयर करंतु, वीडियो को नुहे। यह आम पाई मंगल, आपण पाई भी मंगल। आम राज्य कार्यालय ठिकाना है सुपरस्टार्स एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल, केयर ऑफ ब्रिगेड भवन, प्लॉट नंबर L1739, फेज 2, पोस्ट डुमडुमा, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भाया खंडगिरी, भुवनेश्वर, पिन 751019। धन्यवाद। सुपरस्टार्स एक्सप्रेस रो ऑफिस जोगाजक मोबाइल नंबर है 8260186104। आउ थे कहीदे 8260186104। प्रतिभावान छात्र छात्री एक शुभ खबर। जदि आपणक भितरे कौनसी आश्चर्य प्रतिभा थाए तेबे आम मोबाइल नंबर रे जोगाजोग करंतु। आमे आपनकु आम यूट्यूब चैनल रे प्रतिभा प्रदर्शन सुजोग देबा पई चेष्टा करिवु। बयस 2 वर्ष रु 18 वर्ष।